The topic we are going to discuss about is thermochemistry, and the subtopic is enthalpy of reaction. Let's see what is enthalpy of reaction. It is defined as the enthalpy change which occurs when the certain number of moles of reactants, as indicated by a balanced chemical equation, react together completely to give the products under standard conditions. Standard conditions क्या हैं? 298 Kelvin temperature and 1 atm pressure. For example, 2H2 plus O2 combines to form 2H2O, and enthalpy change is minus 285.8 kilojoule per mole. एंथैल्पी की बेसिस पे रिएक्शंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, आइदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. अगर एंथैल्पी चेंज जो है वो नेगेटिव है, इट वुड बी एक्सोथर्मिक, और अगर एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है, इट वुड बी एंडोथर्मिक रिएक्शंस. Next is enthalpy of formation. It is defined as the amount of heat evolved or absorbed when 1 mole of compound is formed from its elements. जब हम एलिमेंट से एक मोल ऑफ कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, उस दौरान जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या इवॉल्व होती है उसे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं. एंड ऑल द एंथैल्पीज आर कैलकुलेटेड under standard conditions that are minus 298 Kelvin temperature and 1 atm pressure, denoted by HF. Example is magnesium जो है solid state में जब ये half molecular oxygen के साथ react करता है, it forms magnesium oxide that is in solid state. So delta H is minus 692 kilojoule per mole. So the next enthalpy is enthalpy of atomization. It is defined as the amount of heat absorbed when 1 mole of gaseous atoms are formed from the element under standard conditions, denoted by delta H atomization. For example, जब सोडियम solid state में हमारे पास होता है, जब हम उसको gaseous state में convert करेंगे, so enthalpy of atomization would be 108 kilojoule per mole. And enthalpy of atomization would always be positive, क्योंकि heat energy जो है वो हमेशा absorb होगी, क्योंकि bond जो है वो break हो रहे हैं. Here is one of the most important enthalpies, which is enthalpy of neutralization. It is stated as the amount of heat evolved when 1 mole of hydrogen ions from an acid reacts with 1 mole of hydroxide ions from a base to form 1 mole of water. For example, HCl aqueous solution में है, so जब ये constituents atoms में टूटेगा तो हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में होगा एक्वस में, एंड क्लोराइड भी आयंस की फॉर्म में होगा एक्वस में. और NaOH जो है इट्स एन एसिड, NaOH इज अ बेस, so जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो Na पॉजिटिव एक्वस में होगा एंड OH नेगेटिव वुड बी इन एक्वस स्टेट. सो नेक्स्ट, H प्लस एक्वस प्लस क्लोराइड एक्वस, सोडियम एक्वस एंड हाइड्रोक्साइड एक्वस जो हैं, दे विल फॉर्म Na प्लस एक्वस और क्लोराइड एक्वस, ये वैसे ही रह जाएंगे, इनके दरमियान कोई रिएक्शन नहीं होगा. Reaction would be between H plus and OH negative ions and they will form H2O. So H plus aqueous plus OH negative aqueous will form water liquid में. और यहाँ पे जो हमारे पास enthalpy of neutralization होगी that is minus 57.4 kilojoule per mole. Almost enthalpy of neutralization for any strong acid with a strong base is approximately minus 57.4 kilojoule per mole, and this amount और numerical value as such MCQs में पूछी जाती है. And remember one thing, neutralization reaction में जो reaction होता है वो basically H plus और OH negative ions के दरमियान होता है. सोडियम या क्लोराइड आयन के दरमियान reaction नहीं होगा. They are just spectator ions. Let's discuss a question. Neutralization of acid base is spontaneous reaction, exothermic reaction, non-spontaneous reaction, both A and B, means spontaneous as well as exothermic, and the correct option is both A and B.
Next is enthalpy of combustion. It is defined as the amount of heat evolved when 1 mole of substance is completely burnt in excess of oxygen under standard conditions. जब भी हम किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो हीट एनर्जी इवॉल्व होगी, और अगर हम उसको 1 मोल ले रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, सो दैट वुड बी एंथैल्पी ऑफ कंबशन डिनोटेड बाय डेल्टा एच सी. फॉर एग्जांपल, जब हम लोग इथेन को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, and enthalpy of combustion would be minus 1368 किलो जूल पर मोल. एंड ये एंथैल्पी जो है ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगी आपको, क्योंकि यहाँ पे हीट जो है वो हमेशा इवॉल्व होगी. कंबशन में हमेशा हीट एनर्जी जो है वो इवॉल्व होती है, एब्जॉर्ब नहीं होगी. Let's discuss another MCQ. Enthalpy of combustion is measured by bomb calorimeter, manometer, glass calorimeter, thermometer. And the correct option is bomb calorimeter. The next enthalpy is enthalpy of solution. It is defined as the amount of heat evolved or absorbed when 1 mole of a substance is dissolved in so much solvent that further dilution results no detectable heat change, denoted by delta H SOL solution. For example, enthalpy of solution of ammonium chloride is plus 16.2 kilojoule per mole, जबकि सोडियम कार्बोनेट की minus 25 किलोजूल पर मोल होती है. So enthalpy of solution जो है वो either पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट एंथैल्पी. आई होप you have understood lecture very well, and thank you so much.